हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे कि DBMS कोर्स के अंदर जो एक टूल है PostgreSQL और PG एडमिन 4 उसका इंस्टॉलेशन विंडोज़ के अंदर कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्रोम पे आइए या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आइए। PostgreSQL का वेबसाइट ओपन कीजिए। इट्स टेकिंग टाइम। एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि आप डाउनलोड वाले जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी इसके अंदर आपको पूछ रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है, मैकओएस है, विंडोज़ है। तो मैं जो आज डाउनलोड करने वाला हूँ वो विंडोज़ के लिए करने वाला हूँ। सो विंडोज़, डाउनलोड द इंस्टॉलर। ओके। अब यहाँ पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा सभी के सभी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखा हुआ है और 32 बिट्स का। और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स एंड 32 बिट्स। अब ये 32 बिट्स और 64 बिट्स क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जानने के लिए आप अपने कंप्यूटर के अबाउट अबाउट सेक्शन के अंदर जाइए। अबाउट डिवाइस स्पेसिफिकेशंस, अबाउट योर पीसी। इसके अंदर देखिए सिस्टम टाइप क्या है आपका। मेरा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर आपका हो सकता है कि 32 बिट हो या फिर एज इट इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और 32 बिट्स के अंदर ये सपोर्टेड नहीं है, उसके लिए आपको ऑनलाइन एसक्यूएल टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। और जो अपन को सजेस्टेड वर्जन है वो 14.13 है। तो इसके ऊपर फिर आप विंडोज 64 बिट्स के लिए डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो अभी आगे का प्रोसेस देखते हैं। डाउनलोड्स। ओके, ये दिखा रहा है PostgreSQL 14.13 विंडोज x64। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल डबल क्लिक कीजिए। इट विल टेक सम टाइम। यस। एंड नाउ वेट फॉर सम सेकेंड्स। नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। Unselect the stack builder and next, next। ओके। पासवर्ड आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको पासवर्ड याद होने चाहिए, लाइक क्योंकि ये आपको आगे लॉगिन करने के लिए यूज़ होंगे। सो लेट मी सेट अप माय पासवर्ड। Retype the password and now next। पोर्ट 5432 ओके, डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। Now it will take some time to install all the requirements to your system। नेक्स्ट। अब ये कुछ समय लगेगा, लाइक 1 मिनट 2 मिनट में भी, डिपेंड्स ऑन योर रैम एंड सिस्टम। तो ये अपना इंस्टॉलेशन पार्ट अभी ख़त्म हो चुका है एंड नाउ क्लिक ऑन द फिनिश।
Okay, and it all set up. You are ready to use. ओके नाउ देखते हैं कि उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं जो डाउनलोड किया। तो टाइप pg admin in a search bar and here it is showing pg admin 4. So open it. ओके सो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। नाउ क्लिक ऑन द सर्वर्स postgre 14 postgre 16. What are these we will discuss later. Okay, firstly, you have to enter the password that you entered there when you are making your account. So I remembered my password, so I am entering here. Okay, so now I am logged in. By this way, you can also create an account or open the dashboard for pgadmin 4. If you have any queries and any problem while installation or after the installation, you can comment. I will be happy to address your queries and guide you. As I am your senior and you all are my fellow juniors, so you can comment below if you have any queries, either in the DBMS subject or related to the PostgreSQL installation part.